इंच आएगा नहीं, ये 2 इंच आएगा नहीं। You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy.
So good afternoon everyone and welcome to Saurincha Presents Patan Premier League Season 5 as we are running through the playing 11 of MTM Riders who won the toss and decided to bowl first. They have invited Turf Blasters to bat first and we have two young guns. So both the batters, I think it's Bhavik and along with Bhavik it's Smeet Shah. So Rachit Kaushik Shah will bowl the first over from Sunil Gavaskar end as Bhavik has got a promotion up in the batting order and he is joined in by Ankit Sunil Shah. Two slips and a gully. In fact, there are two gullies as umpire Farid Dudwala signals the play and first over right arm round. Saurincha presents Patan Premier League Season 5 match number 14, day number 7. Kick starts. Dot ball. Special thanks to Shri Patan Jain Mandal for all their support and love all these years, an organization and institute that is supporting Patan Jain community since last more than 100 years, since 1912. Thank you, Shri Patan Jain Mandal. That ball came in sharply. Wicketkeeper Tanay Shah, first slip Vishal Patni, second slip Darshil Jhaveri. MTM Riders got to win this and come back on winning ways. Gently placing it in front of the square, a sharp throw by a young gun on a single taken, first one on the board. Ankit has provided few good partnerships to Suchit Jairaj Shah who opened in majority of the matches, barring today's match I guess. But definitely there is a plan that the Turf Blaster skipper and owner has up his sleeve. And the lefty-righty combo. Suchit has always mentioned one thing, that we are a heavy batting side and they would want to put up a score. He told that we would want to touch 140 and if that is done, then I think we will have a great match. As MTM Riders would want to contain them. Only one slip for righty. As Rachit Shah bowls right arm over the wicket. That ball nipping away from the right-hander, bowled in the corridor. Well, we are thankful to all our sponsors who are present here. Trophies are sponsored by Healthy Crunch, by Monica Shah. Wickets are sponsored by Smith Engineering Company. Tushar by Maximum 6 is sponsored by Patni Opticians. Amit Patni. Drove on the onside, a risky single, but they would complete it. Two quick runs, one each for both the batters. Team player of the match, sponsored by Selfie Design, the merchandise store. Thanks, Sahil Shah. Man of the series by MT Madan, that's Kamlesh Bhai Shah. Medical sponsor, Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. That's Bhavesh Jain. Again that ball came in sharply and a direct hit and Bhavik will have to depart. This is Smith Engineering Company, wicket number 1. Brilliant throw on the outfield.
On his follow through by Rachit Kaushik Shah, and first wicket gone. This is definitely a soft dismissal. You cannot get run out in the power play overs, and missing by miles. Smith Engineering Company wicket number 1. Bhavik got out for just 1 run. We are also thankful to our jerseys and kit sponsored JP Hairpins, Kalpesh Bhai Javeri and entire family. Goodies are sponsored by Warmio, love freshly served. Thanks to Sagar Shah. New batter is Manit Shah, wicketkeeper come batter for Tough Blasters. Our hydrating sponsor White Divine, Mamta Shah, is with us, and so is the entire Jairaj Shah family. Our broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited. Cricket balls are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly, Prakash Bhai. Boundaries are sponsored by V Jewels, Jewels by Varsha Exports, Bhavesh Shah. Patan Premier League app and man of the match sponsor SK, we serve since 1932. So that's Ketan Bhai and Gaurav Bhai. And catch of the match sponsored by Trinity Entertainment, Vismay Choksi. New over shall be bowled by Vismay Choksi. Rachit Shah is in the first slip. There's a wideish third man, short gully, short cover, short extra cover and a mid-off. It's a 6-3 field, and Manit Shah would want to begin his match campaign against Vismay Choksi, VC. Good start, straight away, stump to stump. That ball kept low, and using the pace of the ball, he directed it towards third man for a couple of runs. Manit Shah. Score 4 for 1. This year, Patan Premier League has travelled to Surat, Gujarat. Patan is a place in Gujarat known for patolas all over the world. 4 for 1. Vismay Choksi bowling over number 2 from the combox end. Straight as a bow and straight as an arrow, rather, I would say. But what a great delivery that is. I think today's bowler's day. We saw in the first match as well, very disciplined bowling attack by SK strikers, and Physio Niche trying to come as close as possible with the bowling options they had. And after Rachit, it is Vismay. These two are the old war horses of MTM Riders team. Vishal Patni being the part of the golden triangle of bowling department. Rachit, Vishal Patni and Vismay Choksi. 3 veteran cricketers that MTM Riders are blessed with. And all are passionate to perform. That's a good thing about MTM Riders golden triangle. That ball capped low, slightly wideish.
That ball deviated into the right-hander and played with soft hands to take a single. Vishal Patni, the fielder, Vismay Choksi ends his over number 1. Gave away 4 runs. Score at the end of 2 overs, 6 for 1. Ankit on 2, Manit on 3. So that's the playing 11. Suchit Jairaj Shah, the skipper. And then Ankit Sunil Shah, who is right now batting. Asit Shah, man who has already taken 8 wickets. And then Bhavik Shah, who just got out, unfortunate today. Harsh Sanghvi, as Rachit starts the fresh over from Sunil Gavaskar and Smith Hiten Shah, the elastic boy. And Vilesh Mangesh Salvi, the legend. Vinay Shah, again the most experienced cricketer that Tough Blaster has. A dot ball collected well by Tanay Shah. 6 for 1. Score 6 for 1. Third over. Rachit has bowled 3 dot balls and some pressure has started to build on the batter. But then that's what you got to do. The world famous lawn tennis female player Billie Jean King. Oh, look at that shot. Now that was a cracking shot on a cracking track. And V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Right from the middle of the bat, went like a tracer bullet. So I was just talking about Billie Jean King, who has won the highest number of singles titles in lawn tennis. She told that pressure is a privilege. Pressure is given to only those who are privileged ones. And Ankit had 3 dot balls, but look at that shot. Stamping his authority and 4 valuable runs, 10 for 1. Tough Blasters are blasting. Change of pace. Oh, that was a difficult chance, but could have been taken. Intelligent move by captain to force the batsman into the shot. Good try there. Unfortunately, couldn't quite catch it. That's the action replay for you. Beautiful telecast. Courtesy Philco Trade Center Private Limited, our broadcasting partner. 10 for 1, third over. That was a Yorker and played with lower back lift. Bat almost touching the surface. End of over number 3, 11 for 1. Rachit 2 overs, 7 runs. Ankit on 7, Manit on 3. 11 for 1 at the end of 3. You are watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5 as Vismay Choksi to start over number 4.
Again a nip backer, good use of seam. We saw Sahil Rajesh Shah doing that in the first match from the commentary box end, and Vismay stepping into the shoes of Sahil Rajesh Shah. This is match number 14. This time trying to pierce the gap, no need to run for that. Exquisite timing at V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Ankit Sunil Shah using the pace of the ball of Vismay Choksi. Just cutting it at the very last moment. A brilliant square cut for 4 valuable runs. 15 for 1. Turf Blasters have got Ankit Sunil Shah, who has hit 2 brilliant boundaries. Well, that was a nasty one. Hit the unmentionables, and Ankit Sunil Shah straight away feeling some pain. This wicket is not very easy to bat on, and such kind of nip backers can be lethal. That was uneven bounce, and Ankit played well towards short gully for a single. Ankit had 2 brilliant boundaries. First was a cover drive in the previous over, and a square cut in this over. And for Manit, I think Rachit has now moved on to second slip. So there is no first slip. There is a second slip, a wideish third man, a short point, short cover, short extra cover, a mid-off. We have slightly moved a finer almost into now the first slip. So the last match of the day would be between SPS Superstars and Kusum Warriors, which will be played today. Oh, temptation. Now this is what I call temptation. And Manit Shah survived. End of a good over.
2 overs, 9 runs, no wicket. Vismay Choksi, 4 overs, 16 for 1, run rate 4 per over. Ankit Shah, 14 ball 12, Manit Shah, 6 ball 3. I think the run rate is hovering around 4 runs per over today ever since morning, and if we happen to pick that trend, then even this match may well have a total of maybe 100, 110. But too early to say. Ankit has shown good resilience. He is hitting it well. Manit has to carry on, give him the support that he needs. On the other end, a bowling changes on the cards for sure, as Rachit Kaushik Shah now taking himself off the attack, and he has invited Mitul Shah for bowling. Mitul Shah, the new bowler. Beautiful view of the pitch area. Ankit Sunil Shah facing Mitul Shah. Mitul Shah bowling from Sunil Gavaskar end. That ball keeping low, an appeal for LBW, but umpire had thought otherwise. Umpire Farid Ludwala. This time tossing it up from the corner of the crease. They will go for 2. Nicely driven, but a bit of lethargy in the fielding and not happy with himself. The fielder, this will be V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. You cannot afford to give runs like that. These runs will prove costly when the final result arrives. Good stroke by Ankit Sunil Shah, but 4 runs, 20 for 1. (21 for 1). Kushal Patni was the fielder there. MTM Riders need to climb up the position in the points table, and for doing that they need to win this. By end of tomorrow, every team would have played 5 matches, and we would be, starting the countdown to go towards the grand finale, which may happen in the last week of Feb, either 26th or 27th of Feb. 2 months of cricket, every Saturday, every Sunday, different venues. Same players, divided by teams, united by Patan Premier League Season 5. Just pushing it for single. Manit, he won't mind giving strike to Ankit, who is batting well, has hit 3 boundaries, 22 for 1. Slip is still in place. Tanay Shah doing good job. Quick reflexes given by wicket-keeper. Wicket-keeper should be the agile fielder. Should be able to cover point on the off and square leg on the on, fine leg on the on and third man on the off. So there's a half moon
that you can draw. Now look at that. That's what I was talking about. This tournament is blessed with 6 fantastic wicket keepers. 5 ओवर की समाप्ति, 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मितुल शाह 1 ओवर 6 रन, अंकित शाह 17, मानिक शाह 4। आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। ये स्कोर कार्ड है। भाविक शाह ओपनर के रूप में आए थे, रनआउट किए गए रचित द्वारा। 1 रन बनाकर आने वाले बल्लेबाजों में आप देख सकते हैं अंकित कुमार पाड़ शाह, जिगर साळवी, सुचित जयराज शाह, नीरव महेंद्र शाह, आरव शाह, हर्ष संघवी, निसर्ग शाह और विनय शाह। निसर्ग शाह को आज मौका मिला है। निसर्ग मामा के नाम से काफ़ी फेमस है। और नया ओवर लेकर आ रहे हैं विशाल पटनी। ये ट्रैक सूट करना चाहिए विशाल पटनी को, जिस हिसाब से हमने पहले मैच को देखा है। तमाम स्पिनर्स ने आज अच्छी गेंदबाजी की। राइट आर्म राउंड द विकेट, विशाल पटनी। आज के दिन में हमने स्पिनर्स को ज्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा है, यानी कि ओवर रेट आज अच्छा रहेगा तमाम टीमों का। इस बार ड्राइव किया, 1 रन लेना चाहते थे और कामयाब हुए। आज के दिन की एक और खास बात जो हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई 6 लगा नहीं है। पहले मैच में भी कोई 6 नहीं लगा। दूसरे मैच में अभी तक पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ। आज का दिन चौकों का रहेगा ऐसा लग रहा है। रन रेट 4.31। जबरदस्त अपील थी वहां पर। विकेट टू विकेट बॉल करने की यही खास बात होती है विशाल पटनी, लेकिन अंपायर दिलीप पटेल ने वहां पर मना किया। 23 for 1। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास, बैटर और विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई बॉल 9-2-11 हो गई है। और ये लगा बाय का चौका, बाय बाय कहता हुआ वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। इस बार लॉफ्ट कर दिया है, हालांकि चौका बचाने की कोशिश और ये लगा वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। अंकित सुनील शाह का ये एक और चौका। बैठक शॉट जिसको कहा जाता है मुंबईया जबान में, बेंडिंग ऑन योर नीज एंड प्लेइंग इट। टेस्ट क्रिकेट में इसके सौंदर्य को जहीर अब्बास, क्लाइव लॉयड जैसे बल्लेबाजों ने ग्लोरीफाई किया। (31 for 1) पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होते हुए 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर विशाल पटनी 1 ओवर 5 रन। अंकित सुनील शाह 23 गेंदों में 21 पर खेल रहे। मानिक शाह 9 बॉल 5।
मितुल शाह नया ओवर करेंगे 31 फॉर 1, करंट रन रेट 5.17। इस बार बेहतर बॉल थी, लेकिन उसको पुश करते हुए रन जरूर हासिल किया मानित ने, और ओवरथ्रो का रन। इस तरह के अतिरिक्त रन महंगे पड़ सकते हैं। एक अच्छी भागीदारी 31 रनों की 32 गेंदों में देखने मिली इन दोनों के बीच में। बल्लेबाज भाविक जब आउट हुए तब स्कोर था 1। वाइड बॉल 34 फॉर 1। कलाइयों से मोड़ दिया है इस बार, तेज दौड़ भाग रहे हैं वहां पर गेंद के पीछे जश, लेकिन रोक पाएंगे क्या? और इसके साथ ये लगा वी ज्वेल्स चौका। बेहतरीन टाइमिंग के जरिए लगने वाला वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स, और इस बार चौका लगाया मानित ने। स्ट्रोक सिलेक्शन आज देखने लायक रहा है। अंकित खास करके ये पिच पर किस तरह बैटिंग करनी चाहिए उन्होंने बताया। 38 फॉर 1। ड्राइव किया मानित ने, ये एक सही सोच भी है। देखिए, चाहे रेड बॉल का क्रिकेट हो, चाहे लेदर बॉल व्हाइट बॉल का क्रिकेट हो या पिंक बॉल का, चौका छक्का लगाने के बाद सिंगल लेके स्ट्राइक घुमाना, ये क्रिकेट में हमेशा सबसे बेस्ट माना गया है। 39 फॉर 1। मानित भी अब 2 अंकों में प्रवेश कर चुके हैं। 13 बॉल 12, अंकित 23 बॉल 21, स्कोर 39 फॉर 1, 7th ओवर। सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा 40, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त हुए हैं 7। मितुल 2 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। अंकित 22, मानित 12। विशाल पटनी के नए ओवर की पहली गेंद और कड़क शॉट, ये लगा वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स, कड़क। मानो
उस लेदर बॉल के ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा ANKIT, अंकित, और अंकित ने वो चौका अंकित किया, स्टैंप लगाते हुए अपना 44 for 4। अंकित सुनील शाह 26 पर। इस बार ऑन ड्राइव, $45 for 1, 8th ओवर। बाएं और दाएं हाथ के बैटर होने की वजह से लगातार आप देख रहे हैं हमारे अंपायर्स भी अपनी पोजीशंस को बदल रहे हैं। मिड ऑफ के बाजू से 1 रन। विस्मय ने गेंद को फील्ड किया। $46 for 1। आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। इस बार एक और बेहतरीन शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, रोकी नहीं जाएगी और ये लगा आलीशान चौका। वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। अंकित सुनील शाह के बल्ले से आज रनों की रंगोली देखने मिल रही है। कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, स्वीप, कट, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन आज, और 50 रन पूरे हुए, और ये 50 रन बने 47 गेंदों में, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त होता हुआ 8वां, 8 ओवर के बाद स्कोर 50, 1 विकेट के नुकसान पर। विशाल पटनी 2 ओवर 15 रन, इस ओवर में 2 चौके लगे। अंकित 30 गेंदों में 31, मानिक शाह 14 बॉल 13। वरुण गरोडिया को नया ओवर दिया गया है, लेकिन इस बीच थोड़ा सा तकलीफ महसूस करते हुए अंकित सुनील शाह, और तुरंत हमारे डॉक्टर और फिजियो, इनसे गुजारिश है वहां पहुंच जाएं प्लीज। थैंक यू।
नया ओवर करेंगे वरुण, 50 पर 1, 8 ओवर। वाइड बॉल, लूजनर बॉल थी, एक एंगल बनाने का प्रयास था। एक्स्ट्रा की संख्या है 7, 5 बाइज और 2 वाइड, 51 for 1। वाइड बॉल और इसके साथ 50 रन की पार्टनरशिप यहां पर दूसरे विकेट के लिए। मानिक शाह और अंकित शाह के बीच में 50 रन की सॉलिड पार्टनरशिप दूसरे विकेट के लिए। वरुण का ये लगातार एक और वाइड। आने वाले हर रन का स्वागत किया जाएगा टर्फ ब्लास्टर्स द्वारा। और वरुण गोरडिया को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने वहां पर हर्षित पहुंच गए थे। $53 for 1। धीमे से पुश किया हर्षित के पास, वाइडिश सिली मिड ऑन पर। $54 for 1। इस बार थोड़ा सा छेड़खानी करने का प्रयास था अंकित सुनील शाह का, जो महंगा पड़ सकता था। इस बार स्क्वायर कट लगाकर चलते हुए अपने शरीर की शक्ति का उन्होंने संचय किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 55, 9th ओवर। इस बार भी विकेटों के सामने थोड़ा जोखिम जरूर था, लेकिन लिया, क्योंकि मानित जानते हैं कि इसी तरह क्षेत्ररक्षण पर दबाव बनाया जा सकता है। 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर। वरुण ने अपने ओवर में 6 रन दिए, अंकित 32, मानित 15। करंट रन रेट 6.22। तो अगले ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा, ये बताते हुए अंपायर्स। देखिए, सूरत में इस वक्त सर्दियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन दोपहर का तापमान लगभग 30-31 डिग्री तक जाता है, जो मुंबई के समान है। लेकिन रात में टेम्परेचर्स जो है थोड़े डिप हो जाते हैं सूरत की तरफ, 12, 13, 14 तक। और रात का जो मैच रहेगा वाकई में एसपीएस सुपरस्टार्स और कुसुम वॉरियर्स, ये बिल्कुल यहाँ के बगल वाला जो प्लॉट है उसमें खेला जाएगा। मतलब ये मैदान के साथ में लगकर जो मैदान है उस पर खेला जाएगा।
कल भी इसी तरह रहेगा, पहले 2 मैच का स्केड्यूल यहां का रहेगा और फिर नया ओवर लेकर आ रहे हैं मितुल के छोर को बदला गया है। कई बार ऐसा होता है कि एक एंड आपके लिए रास नहीं आता और ऐसे वक्त में गेंदबाज कभी कभी कैप्टन से कहता है मेरा एंड बदलो ताकि मैं बल्लेबाज का द एंड कर सकूं। क्या ये हो पाएगा? आइए देखते हैं। ओवर नंबर 10, 56 फॉर 1, 9th ओवर जस्ट कंक्लूडेड। मितुल शाह 2 ओवर 15 रन। ये भागीदारी अब 54 रनों की हो चुकी है। 54 रन्स पार्टनरशिप फॉर द सेकंड विकेट। एक रन। लगातार एक दूसरे को शाबाशी और प्रोत्साहन की प्रक्रिया जारी है मैदान में। यह बहुत जरूरी होता है कि जब विकेटें न मिल रही हो तो एक दूसरे का प्रोत्साहन करें, एक दूसरे के हौसले को बुलंद करें। इस बार लॉफ्ट कर दिया है और यहां पर इसी विकेट की तलाश थी जो मितुल शाह ने छोर बदला। कैप्टन को कहा हमारा एंड बदलिए, मैं बल्लेबाज का द एंड करूंगा और बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर अंजाम कर दिया है हर्षिद ने। और ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 2। अंकित सुनील शाह बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद ये स्कोर खड़ा किया था और स्कोर बोर्ड को छलांग लगाने के मिजाज में अपना विकेट दे दिया। बत्तीस रन बनाकर आउट हुए अंकित सुनील शाह और अब नए बैटर आ रहे हैं टीम के कैप्टन और ओनर सुचित जयराज शाह। ये एक्शन रिप्ले, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ऊंचाई नहीं मिल पाई और एक आसान सा कैच। एक छोटा सा करेक्शन है, ये कैच निर्मित ने लिया था। सुचित शाह $57 for 2। अब ये मौका मिला है मितुल को दोहरा झटका देने का, लेकिन मानित अभी तक बहुत अच्छी पारी खेली है। उन्होंने अपने जो भी रन्स बनाए हैं अंकित को अच्छा सपोर्ट किया और यहां से एक और पार्टनरशिप अगर बन जाती है तो टर्फ ब्लास्टर्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी। 16 पर खेल रहे हैं मानित। पुश किया विकेटों के सामने, 1 रन विस्मय चोकसी का थ्रो था स्टंप्स की तरफ। तने ने अपने दस्तानों में गेंद को कैद किया। 58 for 2।
इस बार देखना होगा, अंदरूनी सीरा लगा है अथवा नहीं। गेंद जा रही है फाइनल की तरफ, एक तेज दौड़ लगाकर अब जाकर उसे रोका गया। सुचित जब तक भागकर दूसरा रन पूरा करते हुए मानित ने साथ निभाया और ये लेग बाय। वरुण ने गेंद को रोका था वहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर 60। 12 एक्स्ट्राज है 60 में, यानी कि 20% रन आज एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, तेज कदम भागती हुई गेंद, रचित और गेंद के बीच में रेस। रचित ने आखिर रेस जीती, गेंद को रोका, लेकिन जब तक सुचित ने 2 रन पूरे करते हुए पूरा किया मौका। मितुल का एक कामयाब ओवर, 3 ओवर 19 रन 1 विकेट। कुल स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 62 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 62 for 2 एट द एंड ऑफ 10 ओवर्स। So start of the fresh over from the far end, that's Sunil Gavaskar end by Varun, and it will be interesting how they approach remaining 10 overs. Good job so far by Turf Blasters, but MTM Riders are not so far behind. They have got 2 good wickets, but the only way is to put pressure is by taking wickets. 63 for 2. Oh, once again lucky to have survived. There is another race, this time between Vismay Choksi and White Leather Ball, and this will be by V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports 4. We welcome all our sponsors today. Our title sponsor, Saurin Baisha, is with us. We are thankful to Shri Patan Jain Mandal for their support. The entire committee of Shri Patan Jain Mandal, we are thankful to you. Oh, that was another beautiful delivery. Varun Garodia being given an opportunity to restrict the batter, and he has done a decent job. This time making a room for himself, goes for a single. Suchit, 68 for 2. We are also thankful to our trophy sponsors, Healthy Crunch by Monica Shah, who is present with us. Our wicket sponsor, Smith Engineering Company, Tushar Bhai is with us. Maximum Success Award by Patni Opticians. So special thanks to Mr. Amit Patni. Team Player of the Match Award sponsored by Selfie Design, Sahil Shah.
Man of the series sponsored by MT Madan. Kamlesh Bhai is with us. Medical sponsor Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. And we welcome Bhavesh Jain. 68 for 2 at the end of 11 overs. I think Mithul continue. Varun Garudia, 2 overs, 8 runs, no wickets. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins, Kalpesh Javeri and the family. Goodies are sponsored by Warmio, Love Freshly Served, Sagar Bhai. Hydrating sponsor White Divine, Mamta Shah and family is with us. Broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited, big name in ball bearings. Thank you so much. Because of you, we are able to see this live telecast from around 150 countries right now. And from anywhere you can watch this. You simply need to subscribe to Patan Premier League channel. Cricket balls are sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly, Prakash Bhai. This time goes deep into the crease and tries to balloon that delivery in the air, but gets a single. Vishal Patni came running in. Boundary sponsored by We Jewels, Jewels by Varsha Exports. PPL app and man of the match sponsor SK. We serve since 1932. Ketan Bhai, Gaurav Bhai and family. And catch of the match sponsored by Trinity Entertainment, Vismay Choksi. This time a confident shot, although he will get just a single, but they need to carry on from here. The good work that he has done. Manit Shah has the ability, but he will have to show the adaptability to new conditions and post a good total along with his skipper Suchit Jairaj Shah. 70 for 2, strong batting. Single to Suchit. Both these batters are not in any hurry. They are playing a waiting game, and which is need of the hour as the pitch is new. There's a hot afternoon and they have a score to set. MTM Riders won the toss and invited Blasters to bat first. Lower full toss and very delicately placed it towards mid wicket for a single. Darshil Javeri stopped the ball and end of over for Mithul Shah. 4 overs, 23 runs and 1 wicket. And this is definitely a good bowling performance, keeping in mind the modern T20 rules, the laws and the conditions. So run rate 6 per over. As Varun Garudia gets another chance, 2 overs 8 runs. Varun, Rachit Kaushik Shah 2 overs 7 runs. Mithul 4 overs 23 runs 1 wicket. Vishal Patni 2 overs 15 runs. And Vismay Choksi 2 overs 9 runs. Fall of wickets, first on second, score of 2, second on 57. This partnership is worth 15 runs as of now for the third wicket. Varun Garudia
bowling right arm round. Manit driving it, fielded well by skipper at the long on. You are watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5 here at Lal Bhai Contractor Stadium in Surat, Gujarat. Single to Suchit. And that is what I like today about the approach in the batting. 74 for 2. Driving it nicely. Varun Gorodia has done a decent job today. I think he has rose to the occasion and justified his selection in the team purely on the basis of merit in bowling. This time a lower full toss, steps down and takes a single. Manit, we are yet to see the first 6 of today. Who will be that batter? And believe you me, this is a proper first class ground. So hitting 6 here is not going to be an easy, but not difficult also, if your timing is right. Oh, a poor fielding once again, and this will be V Jewels 4 Jewels by Varsha Exports. $79 for 2. The way these two are batting, we are definitely to touch the score of at least 130. Slapping that delivery by going deeper into the crease. There is an appeal. And umpire Farid Doodwala has referred to the third umpire. So twist in the tail. I think Suchit Jairaj Shah has already started walking. He has realized that he has goofed up, and this is Smith Engineering Company, wicket number 3 gone. As Suchit has started walking back to the pavilion. थ्रो किसने किया वो खुद से थ्रो आपको पता है किसने किया कवर से New batter is Harsh Sanghvi, replacing Suchit Jairaj Shah. Suchit scored 10 runs. And a partnership of 22 runs. On a pitch like this, partnership of 20, 22, 30, 32 is always going to matter the most, as Harsh Sanghvi joins in Manit Shah. But this is the celebration time for MTM Riders. They have worked very hard. They were struggling for wickets. Now that they have got it, they would want to go ahead and get the advantage in their favor. सुचित किती रनवर आउट झाला
क्या बोला सर हर्षित ना दूसरा बॉलर का नाम क्या था वरुण आता कोण आहे आता विचारतो थांब विशाल पटनी अरे न्यू बॅट्समॅन कोण Harsh Sanghvi is the new batter and he's getting ready to face Vishal Patni. 79 for 3, considering the pitch and the conditions. I think they are going at a decent rate, but Suchit should have survived for a couple of more overs because he has that capacity to whack the ball out of the park, and in the last 5 overs probably he and Manit could have gone berserk, but nevertheless Manit has really played an inning full of patience, and Manit will have to ensure that he remains not out till the 20th over in order to see a good score. Although the surface is tingy green, the ball is kept low. There's an appeal. That ball turned into the right eye, and this time threading the gap between the two fielder. What an exquisite placement, and that will spin to the fans for V Jewel Sport, Jewels by Varsha Exports. What a shot that was. Harsh Sanghvi started the productivity right from the word go, and good chase there, but the placement was so good that it was unstoppable. 83 for 3. Run mission continues. Single to Sanghvi. Manit himself is a wicket keeper, so he has good legs. 84 for 3. So Vishal is yet to take a wicket in this match, has given away 20 runs. Single in the circle. $85 for 3. A straighter one and quicker one. Vishal Patni has got a lot of varieties. And end of over number 14, 85 for 3. Manit not out on 23 to face Varun, who is going to bowl his last over. 3 overs, 15 runs.
Single. Harshid, the fielder. (86 for 3). Harsh Sangvi now will face Varun. Over pitch and driven nicely. Single on that on drive. Vishal Patni, the fielder. 88 for 3. Correction, 87. Single. What I like about Manit is he is always in lookout for the runs. That's what you got to do. (88 for 3), 15th over. 5 more overs after this. That was a flighted delivery and played inside out for that drive for single. Harsh Sangvi, he has started contributing with bat and has provided the support that Manit Shah would have appreciated. 89 for 3. Another push. 90 for 3. Varun Goradia finishes a spell. 4 overs, 20 runs. Not a bad job. I mean, you just give 20 runs of 24 balls in your first bowling performance and gets a tight hug from Darshil Javeri. And Rachit Shah now marshalling his resources. Vishal Patni to continue. छह रन के रन रेट से इस वक्त बल्लेबाजी चल रही है. आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5. मानित 26 गेंदों पर खेल रहे हैं और ये 26 रन बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं मैच की दूसरी पारी में जब टर्फ ब्लास्टर्स गेंदबाजी के लिए उतरेगी एमटीएम राइडर्स के सामने. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए यहां पर एमटीएम राइडर्स. (90 for 3). फुल टॉस बॉल थी, इसको खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था मानित ने. एन वक्त पर अपने स्ट्रोक को शायद चेक किया, दोहरे दिमाग में थे खेलूं या न खेलूं. 91 for 3. इस बार बॉल नीचे रही. एमटीएम राइडर्स ने भी अच्छा कमबैक किया है ऐसा हम कह सकते हैं. 3 बेहतरीन विकेट उन्होंने अब तक गिराए हैं.
और इस बार ब्लाइंडर. नाउ दिस इज कैच ऑफ द मैच. ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच. और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 4 और मैदान के बल्लेबाज हुए मैदान से बाहर. ब्लाइंडर. ओहो. फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के टेलीकास्ट की तारीफ करना चाहूंगा. हमारे टेक्नीशियंस जान डाल देते हैं इस तरह के टेलीकास्ट में, और तब जाकर आपको इतना बेहतरीन फोटो फिनिश वाला क्रिकेट देखने मिलता है. विशाल पटनी. पटनी हर मैच में विकेट लेता है, यह बड़ी बात है. पटनी को विकेट दिए बगैर उसकी गेंदबाजी से रन लेना, इसका मतलब यह है कि किसी साहूकार से बिना ब्याज के लोन लेना. पटनी आता है, पटनी विकेट लेता है. और इस बार तो देखिए, इसके पहले 2 बार उनके हाथ से चौका छूटा, लेकिन यह विशाल पटनी है, यह हार मानने वाला पटनी नहीं है. और इसलिए उन्होंने वो ब्लाइंडर कैच लेके वहां पर पारी समाप्त की और वापस लौटना पड़ा हर्ष संघवी को. और नए बैटर के रूप में अब आ रहे हैं स्मिथ हितेन शाह. बहुत बेहतरीन कैच वहां पर विशाल पटनी द्वारा. और इसीलिए यह कहा जाता है कि इडली वड़ा सांबार के साथ चटनी और एमटीएम राइडर्स में विशाल पटनी यह जरूरी है. 91 for 4. बहुत अच्छा ऑफ ब्रेक गेंद थी. नजरों को झुका के एहतराम के साथ 1 रन पूरा किया. दूसरे की दौड़ लगा चुके स्मिथ हितेन शाह के अंदर वो स्फूर्तिलापन है. ही इज द इलास्टिक बॉय ऑफ पाटन क्रिकेट. (93 for 4). 16वां ओवर. विशाल पटनी अपनी आखिरी गेंद करने के लिए तैयार है. अब तक 24 रन देकर 1 विकेट लिया है. ओवर समाप्त. 16 ओवर 93 रन 4 विकेट. 16 overs 93 for 4. विशाल पटनी 4 overs 24 runs 1 विकेट. मानिक शाह 27 of 34. स्मिथ 2 of 2. करंट रन रेट 5.81. करंट स्कोरिंग पैटर्न के हिसाब से 116 का स्कोर बन सकता है. और 8 रन के औसत से अगर चलें तो 135 तक जा सकता है, बट कोशिश करनी होगी. विस्मय चोकसी के भी छोर को बदला गया है. हर वो गेंद जिस पर रन नहीं बन रहा है वो डेफिनेटली एमटीएम राइडर्स को इस मुकाबले में प्रोत्साहन दे रही है. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय था, अब जाकर थोड़ा सा सही नजर आ रहा है. चतुर गेंद.
इस बार बल्लेबाज को जैसे ही बाहर आते हुए देखा, जानबूझकर गेंद को शॉर्ट रख दिया विस्मय चोकसी ने। ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच अवार्ड के वो स्पॉन्सर भी है। और क्या बेहतरीन कैच आज लिया विशाल पटनी ने। इस बार खेला नॉन स्ट्राइक एंड के बैटर के ऊपर से 1 रन के लिए। विस्मय चोकसी 3 गेंदों में अब तक 1 रन दिया है। और एमटीएम राइडर्स चाहेगी कि आखिरी 5 ओवर में हर ओवर में कम से कम 2-3 डॉट बॉल करे। यही एक तरीका है स्कोर को चेक करने का, कंट्रोल में रखने का। इस बार चाइनीज कट, बल्ले का अंदरूनी सिरा, गेंद तेज आउटफील्ड पर भागती हुई मैदान के बाहर चली जा रही है। एक बढ़िया चौका। वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। और यहां पर देखिए अब ये बहुत बड़ा विकेट, स्मिथ हितेन शाह के बचाव को भंग करती हुई वो सम्मोहिनी। और यहां पर विस्मय में डाल दिया सभी को। स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी, विकेट गिरता हुआ। स्टंप टू स्टंप, सिम के सहारे गेंद आई और कहां चली गई पता नहीं चला। नए बैटर है विलेश साळवी। स्मिथ हितेन शाह 6 रन बनाकर आउट हुए। एक अच्छी भागीदारी हो ही रही थी कि वहां पर अब नियमित अंतराल पर एमटीएम राइडर्स विकेटें गिराते आ रहे हैं। मितुल शाह के छोर को बदला, मितुल ने विकेट लिया। विस्मय के छोर को बदला, विस्मय ने विकेट लिया। पूरे मार्क्स रचित कौशिक शाह को देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने इस मैच में अपने टीम को लीड किया है। कैप्टनशिप का ये उनका पहला साल है और टीम ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया उनकी लीडरशिप क्वालिटी को। 98 फॉर 5। टर्फ ब्लास्टर्स एक अच्छी शुरुआत के बाद, मतलब जो दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप रही थी 55 रनों की, उसके बाद अगर देखें तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में अब यहां पर अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। खैर अभी भी काफी गेंदें बची है। और विलेश साळवी आते ही उन्होंने गेंद को दिशा दी और वाली आते हुए ये वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। ये विकेट का रिप्ले आपके सामने। विलेश साळवी, बॉलीवुड में जो एवरग्रीन जितेंद्र है ना, वो पाटन जैन क्रिकेट में विलेश साळवी है, ऑलवेज इन डिमांड। और ये हमारी कैमरा टीम ने देखिए मैदान के ऊपर से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर को कैप्चर किया। आज के दिन में हेलीकॉप्टर शॉट अभी तक देखने नहीं मिला है। ग्रेट कैमरा वर्क बाय आवर एंटायर ब्रॉडकास्टिंग टीम। और हमारे ब्रॉडकास्ट के स्पॉन्सर है फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। 103 फॉर 5।
करेक्शन हमारे स्कोरर रिकंसाइल करते हुए इसको विल कम बैक. रचित शाह के ने ओवर की पहली गेंद तेज भागते हुए मानित ने 2 रन पूरे किए. मानित अब थोड़ा आक्रामक रवैया दिखाते हुए, उन्हें पता है कि अब वो समय आ गया है. मानित शैलेश शाह, $104 for 5 विकेट्स. आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5. श्री पाटन जैन मंडल के सहयोग और साथ और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, टीमों के ओनर्स की बदौलत लगातार 5वें साल हम आपके सामने एक कामयाब टूर्नामेंट रख पा रहे हैं. इस बार हल्के हाथों से खेल दिया था. गेंद जा रही है शॉर्ट कवर में. 1 रन और. $105 पर 5. छोटी छोटी पार्टनरशिप शुरू होती ही है कि वहां एक विकेट गिर जाता है, उसको रोकना होगा. अब ये दोनों पारी को समाप्त करके अगर लौटते हैं तो टर्फ ब्लास्टर्स के हित में रहेगा. 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और जो 130 के स्कोर की हम अपेक्षा कर रहे थे वो संभव है. सुचित ने 140 के आसपास कहा था इंटरव्यू में, वो भी पॉसिबल है क्योंकि विलेश साळवी और मानित दोनों क्रीज पर है. एक रन और. धीमी गेंद नीचे भी रही और वाइड बॉल. अठारह एक्स्ट्रा रन है. 5 वाइड 1 लेग बाय 12-22. 18 एक्स्ट्रा. 108 में 18 एक्स्ट्रा. इस बार स्क्वायर ड्राइव लगा दिया. क्या नजाकत के साथ खेल दिया है विलेश साळवी ने. यह लगा वी ज्वेल्स चौका. ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये दो टीमों के बीच में जब मुकाबला होता है ना, खतरनाक होता है. पिछले साल का ओपनिंग मैच 106 वाला मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ मैच मैंने देखा. इस बार धीमे पुश किया. 1 रन पूरा किया. दूसरा लेना चाहते हैं वाली. वहां पर तेज कदम भागेंगे. रन बन रहे हैं, तेजी से बन रहे हैं, ये अच्छी बात है. 18 ओवर 114 पे 5. 114 for 5 at the end of 18. Current run rate 6.28. Manit not out on 32. Vilesh Salvi not out on 11.
विस्मय चोकसी अपना चौथा और पारी का 19वां ओवर करेंगे। आखिरी 12 गेंदें बाकी है। इंप्रूव होके खेलने का प्रयास और मानित ने जब वक्त आया अपना विकेट दे दिया। तीनों स्टंप खोल दिए थे वहां पर और यहां पर बोल्ड आउट कर दिया। स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट गिरता हुआ मानित की एक संघर्षपूर्ण पारी समाप्त होती हुई 32 रन बनाए उन्होंने। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। It's PPL पाटन पेनली, It's PPL पाटन पेनली। थीम सॉन्ग है और इसके दौरान एक जो रैप आप सुन रहे हैं वो रैप हमारे ऋषभ शाह ने खास अमेरिका से उसको अपनी आवाज़ दी है। कंपोज करते समय भावेश भाई के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहा है हमारे केतन भाई के सुपुत्र ऋषभ शाह, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। ओवर पिच बॉल लॉफ्ट किया है, 1 रन विनय को मिलेगा। विनय दूसरा चाहते हैं वहां पर और पूरा कर लिया विनय ने। एक 116 पर 6। दोनों सीनियर क्रिकेटर्स, ओल्ड इज गोल्ड। सिंगल, लेग बाय। सो 120 का पहला माइलस्टोन तो टच कर जाएंगे, लेकिन अगर 130-35 तक भी कोशिश हो तो बुरी बात नहीं है। 20 एक्स्ट्रा अभी तक, 13 बाय 2 लेग बाइज, बाकी वाइड्स। Leg by 119 for 6, 19th over, 22 extras, 5 wides, 3 leg bys, 14 bys. इस बार विलेश ने ड्राइव किया, 1 रन पूरा किया। दूसरा रन वो विनय को दौड़ा कर ही वापस लौटेंगे, ये उन्होंने तय किया और विनय ने भी साथ दिया वाली का। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों का जर्सी नंबर भी 18 है। (121 for 6), 120 का माइलस्टोन हासिल किया। अब यहां से कम 10 और हो सके तो 15, 17, क्योंकि अभी भी 4 विकेटें बाकी है और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं अब कप्तान स्वयं रचित कौशिक शाह। विस्मय चोकसी यहां पर अपने 4 ओवर पूरे कर चुके हैं।
रचित 3 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। विस्मय 4 overs 23 runs, 2 wickets. और विनर ने यहां एक आसान कैच दे दिया, ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच वरुण गोरडिया द्वारा, और ये स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 7। रचित ने बिल्कुल बल्ले की जड़ में गेंद को किया था, विनय के लिए स्ट्रोक के लिए जाना लाजमी था। थोड़ा रचित की तरफ मुस्कुराते हुए वापस लौटे विनय शाह, और नए बैटर है नीरव महेंद्र शाह। नीरव महेंद्र शाह को हमने अब तक बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हुए देखा था, आज उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा नीचे आता हुआ हम देख रहे हैं। अभी भी 5 गेंदें बची है, और 5 गेंदों में अगर 10 रन भी बनते हैं तो 131 शुड बी अ गुड स्कोर। पहले 10 ओवर अगर मैं देखूं तो टर्फ ब्लास्टर्स, लेकिन आखिरी 10 ओवर केवल और केवल MTM राइडर्स। असली क्रिकेट MTM क्रिकेट। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए खेला जरूर है, 1 रन को 2 में तब्दील भी कर लेंगे। वहां पर नीरव विलेज साड़वी भी देखिए, बहुत ही शालीन फ्लेक्सिबल खिलाड़ी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1-2-3 123 पर 7। MTM राइडर्स ने वो मेहनत जरूर की है, वो 4 पॉइंट हासिल करने की दिशा में सही मेहनत। आगे आए, नजर हटी, दुर्घटना घटी, स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 8। रचित को देर सवेरी क्यों न हो, सफलता जरूर मिली है। फिनिशिंग द टेल इज नॉट एन इजी जॉब। देखिए गति परिवर्तन और आंखें मूंद के खेलने का प्रयास नीरव महेंद्र शाह का। बोल्ड और नए बैटर अब मैदान में, मौलिक शाह। MTM टीम को देखकर मुझे वो MDH मसाले की याद आ गई। असली मसाले सच सच, MDH। वैसे ही असली क्रिकेट सच, MTM। 123 फॉर 8। बहुत रिकवर किया इस मैच में MTM राइडर्स ने, क्योंकि जब मानित खेल रहे थे, सुचित खेल रहे थे, एक ऐसा स्टेज था, या अंकित और मानित, ये वो गोल्डन पीरियड था जब दोनों बैटर बैट कर रहे थे, और जो 55 रन की पार्टनरशिप हुई। अपीलर आउट, LBW स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 9, और रचित कौशिक शाह हैट्रिक पर आ चुके हैं। रचित बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद सीम के सहारे टप्पा खाकर नी रोल के नीचे लगी, और अंपायर दिलीप पटेल को ज्यादा वक्त नहीं लगा अपनी उंगली को उठाने के लिए। अब आखिरी बैटर मैदान में आसित शाह। आसित शाह हमारे कमेटी मेंबर भी हैं। तमाम हमारे कमेटी मेंबर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तुषार भाई आज हमारे साथ उपस्थित हैं, भावेश शाह, निशित शाह, आसित शाह, विस्मय चौकसी, हर्षल शाह, पुनीत शाह, कविश जवेरी, साहिल शाह और वीरेश भाई शाह। आज अश्विन भाई शाह भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। चार बॉल में 3 विकेटें और अब हैट्रिक पर, क्या वो ऑल आउट कर पाएंगे? आज के पहले मैच में हमने पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ऑल आउट होते हुए देखा, क्या यह सिलसिला जारी रहेगा? हैट्रिक बचा दिया आसित शाह ने।
आगे आके उठा दिया है, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरा भी पूरा कर लेंगे वहां पर आसित शाह, और 125 9 विकेट के नुकसान पर। कितना बड़ा टर्न अराउंड एमटीएम राइडर्स का। पहले 10 ओवर में स्कोर था 62 फॉर 2, और उसके बाद के 10 ओवर में अगर देखें तो 63 फॉर 7। ये जबरदस्त वापसी एमटीएम राइडर्स टीम ने की है, और जब वो वापस लौट रहे हैं उनका भव्य स्वागत किया जाएगा टीम मैनेजमेंट द्वारा। ये बॉलिंग एनालिसिस, मितुल 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, रचित 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, वरुण 4 ओवर 20, विशाल पटनी 4 ओवर 24 1, विस्मय 4 ओवर 23 रन 2। फॉलो विकेट्स, पहला 2, दूसरा 57, तीसरा 79, चौथा 91, पांचवा 98, छठा 114, सातवां 121, आठवां 123, नौवां 123। 22 एक्स्ट्रा। एमटीएम राइडर्स ने 22 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, जो शायद एक बड़ा फैक्टर रहेगा। लौटेंगे कुछ देर बाद, लेकिन कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है। मुश्किलें तो जारी है पर हौसले भी तो भारी है। Made it this far with the grace of the partners, हो गया ये बेड़ा पार, टैलेंट वालों कर लो अपने सपने साकार, जो भी मिला मौका कर लो सीधा बाउंड्री के पार। Togetherness and unity is अपरंपार, ये है मौका to be a shining star। आओ देखो पाटन वाले, आओ देखो संसार, हमारा कमाल और क्राउड की जयकार। Let's do it, let's hit it, let's beat it, let's win it, every catch, every six has our passion within it। It's that time of the year, it's where you wanna be, it's the Patan Premier League, what else you gonna see? मैदान में चलती है स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती है वो गूंजे ताली की। मैदान में चलती है मस्ती स्लेजिंग और गाली भी, पर जोश जगाती रग रग में वो गूंजे ताली की। जी जान लड़ा देंगे चाहे खून पसीना हो, हम जीत के आएंगे ये 84 ना हो। Let's hit it, let's beat it, let's play fair all the way, it's PPL, let's do it, let's win it, it's PPL। It's PPL. Hit it, beat it, do it, let's win it. It's PPL. मुश्किलें तो जारी हैं, पर हौसले भी तो भारी है, कुछ कर दिखाने की अब अपनी बारी है।
I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy.
मातृभूमि तारी कृपा की श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया मातृभूमि तारी कृपा की श्रद्धा न स्वर गूंजाया पूर्वावस्था तारा स्मरणों सूर बनी ने छलकाया टन 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 टनाटन पाटन करवी गुजरात નું આ પાટણ મારું ગૌરવ વતન મારું પાટણ ટન 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 પાટણ ધરતી આ ગુજરાતની મારા દેશનું અભિમાન છે ધરતી આ ગુજરાતની મારા દેશનું અભિમાન છે રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે રાણીની આ વાવડી મારા દેશનું સન્માન છે આ વસુંધરાની યાનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી સૌ કોઈ બોલો શાનથી હું પત્ની છું હું પાટણનો પત્ની છું પત્ની છું નગરી રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે નગરી રાજા સિદ્ધરાજની અણહિલપુર એનું નામ છે પંચાસરાને શામળાજી મહાતીર્થોનું આ ધામ છે પંચાસરાને શામળાજી મહાતીર્થોનું આ ધામ છે આ વસુંધરાની આનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી સૌ કોઈ બોલો શાનથી હું પત્ની છું હું પાટણનો પત્ની છું હું પત્ની છું પત્ની છું हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे हेमचंद्राचार्य ज्ञानपीठ जैन ग्रंथोनो भंडार छे મા સરસ્વતીનો વાસ અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે मां सरस्वतीनो वास અહીં આ વિદ્યાધરોનો દ્વાર છે આ વસુંધરાની આનથી ઉઠે છે મસ્તક માનથી સૌ કોઈ બોલો શાનથી હું પત્ની છું હું પાટણનો પત્ની છું પત્ની છું ટન ટન ટનાટન પાટણ કરવી ગુજરાતનું આ પાટણ ટન 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 ટનાટન પાટણ મારું ગૌરવ વતન મારું પાટણ दूर भले छू ताराथी पण देश प्रेम ना जा माटीनी खुशबू तारी केम करी विसरा So good evening friends and welcome to Saurin Shah Presents Patan Premier League Season 5. Match number 15 and Sohil Shah and Tanay Shah are there to chase down the score as the first over will be sent down by Vilesh Salvi. What I like about Vilesh Salvi, see his t-shirt number has changed now. He has got 18 number with the view written on it. So that's the tribute he wants to pay to Vivek Dalal. I think that's a great thing
And he also told while receiving the Man of the Match award that this is for you, Viv and his wife. So I think Vilesh Salvi is definitely an honest cricketer, and he will be bowling from the commentary box. And Suchit Jairaj Shah is at first slip. Wicketkeeper is Manit Shah. And then they have got Bhavik Shah at third man, Smith Hiten Shah at gully, Vinay Shah at short extra cover, and Maulik at mid-off. Harsh Sanghvi is at mid-on, Manish is at short mid-wicket, Asit is at wideish backward square leg. Wide ball, and this will be freebie, is 5 runs. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Considering the bounce on this pitch, margin of error would be minimal for any team. Nothing wrong with the delivery, but after pitching, that ball moved away from the righty batter on the leg stump and 4 wides. So score is 5. Target is 126. Remember, we saw 22 extras in the first innings, against which we already have nicely driven. Sohail takes a single. Maulik the fielder. Turf Blasters, after being invited to bat first, scored 125, and now MTM Riders, who would want to climb up the table and grab 4 points, are chasing 126. We welcome owner of MTM Riders, Kamlesh Bhai and Hemal Bhai and family, and also owners of Turf Blasters, that's Suchit Jairaj Shah and family. You are watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. Again a wide signalled by umpire Dilip Patel. Both the umpires, umpire Dudwala and umpire Patel, have been consistent when it comes to giving wides, especially on the leg side. Wali has the natural angle. So this time waited for the delivery, and Tanay Shah takes a single. Asit Shah the fielder. Eight runs. While chasing 126, power play score would also be equally important, as both these batters would want to encash on every single opportunity of loose ball. Playing away from his body this time, Wali pitching it up. That's what you got to do. Bowl it in the right areas and entice the batsman to offer the stroke. But batter Sohail was nowhere near the ball. Swing and a miss. 8 without any damage. Chasing 126. Good drive. Single. Maulik the fielder. End of first over, 9 runs. 117 required now of 114 balls. Or rather, it's not yet over. We still have a delivery left. So that's 115 balls left. And 117 to win.
Again a fuller length delivery, slightly wideish and picked up well by Manit. End of over number 1. Vilesh Salvi completed his first over. Well, even Turf Blasters have good bowling options. They have got Vinay who can bowl, and then there is Asit, Vilesh, then Neerav Mahendra Shah, and Suchit himself. So Suchit to start fresh over from Sunil Gavaskar end. Two good innings by Ankit Sunil Shah and Manit Shah allowed them to reach this respectable total, but they will have to contain. And Mr. Extra would be the game changer in this match. We welcome all our sponsors, team owners and their family members here at Lalbhai Contractor Stadium in Surat. There is a place called as Vesu nearby, and this is where the ground is located. Surat, one of the smartest cities in India, one of the most cleanest city, winning the first prize. Special thanks to our trophy sponsors, Healthy Crunch by Monica Shah, Wicket sponsored by Smith Engineering Company, Maximum Sixes by Patni Opticians, Team Player Award by Selfie Design. Man of the Series by MTM. Medical sponsors Healing Pharma Private Limited, Your Health is Our World. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins. Goodies by Warmio, Love Freshly Served. Hydrating sponsor White Divine. Broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited. Balls sponsored by Allied Digital, IT managed responsibly. Boundaries by V Jewels, Jewels by Varsha Exports. Patan Premier League app and man of the match by SK, we serve since 1932. Catch of the match by Trinity Entertainment, and special thanks to Sri Patan Jain Mandal. Suchit is striking gold, 4 dot balls, reminding me of a logo of Audi car. This time hit through the line and takes a single. That is very important, hit through the line. Last match of the today's schedule will be between Kusum Warriors and SPS Superstars, which will begin in about 2 hours from now. So, nice over completed by skipper, just 1 run of it. 2 overs, 10 runs. 116 required of 108 balls. Required run rate 6.44. Sohil Shah 3, Tanay Shah 1. Vilesh Salvi once again working on his run-up. Very important part of the bowling, a good run-up, how you grip the ball, how do you land. So before landing, the pre-delivery stride and delivery stride, follow through. These are few important things for any bowler, and especially for medium pacers and pacers. With spinners, it's not much difficult, but you will still see few spinners always taking the run-up. Vilesh Salvi, and he'll be bowling to Sohil.
rubbing the ball on his track pant. Turf blasters reminding me of New Zealand rugby team and cricket team. Black caps. New Zealand are supposed to be the best team in men's rugby, and they do haka dance before rugby match, wishing each other as Zikau Ramiata. Wali bowling a tight line. Yeah, so coming back to New Zealand, the Maori Adivasis, the tribals, they wish each other Zikau Ramiata while they go in the jungle, which means all the best. Zikau Ramiata. Dalbot kept low. This is one track where the batter's judgment is going to be very important. Unlike Kavirni or Fatima or any other ground that this tournament has been played so far, this pitch is totally different. Nice straight drive, and this will give him 4 valuable runs. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. First bad ball of this over and dispatched with respect to the fence. Slightly uppish, but you can't set fielding for such strokes in cricket. 14 without loss. Lower full toss again threads the gap between the two fielder, and that will go to the fence for 4 runs. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Vilesh Salvi, after bowling 3 good deliveries, 2 back-to-back boundaries by MTM Riders. Riders are hungry, and they are hungry to win. They are hungry for success under the leadership of Rachit Kaushik Shah. Now Wali again back into the shape. End of over number 3, 80. Now 106, rather 108 still required. Wali is like that transistor which needs to get fine-tuned, and immediately got fine-tuned and the right note. So beautiful graphics on your monitor. Well, this is a delight to watch. The camera team and the mixing team, editing team, production team, and our own very specialized graphic designer, IQ, doing great job. And this live broadcast is courtesy Philco Trade Center Private Limited. Suchit Jairat Shah to bowl over number 4 from the far end. Suchit not at all happy. I think wicketkeeper Manit has got himself injured, and straight away Bhavya on ground. So is Vishal Patni, and maybe physio would also want to go there.
physio for some first aid. I remember those days when Dr. Ali Irani used to be physiotherapist for Indian team, and he did a commendable job as a physiotherapist. Dr. Ananta Joshi, who gave treatment to Sachin Tendulkar on his tennis elbow. So I think that physiotherapists also play a very big role in any big tournament. Another beautiful delivery, keeping low. This is the characteristics of this particular pitch. Ball is keeping low at both the ends. Cracks are wide but not opening up completely. There are a few good deliveries as well. Another stump to stump, and Wali stops at mid-off. Again 3 dot balls by Suchit in this over. Four dot balls. Last over also he bowled a similar pattern. Oh, will be able to see the first maiden of the day. And this would be a perfect end to the over if it's a maiden. 18 without loss. This time trying to pull that delivery. Tanesha dispatching it to the fence. And there she goes like a telegraph for 4. We Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. 22 without loss at the end of 4. Sohil 11, Tanay 5. 104 required to win the match. Of remaining 96 balls. Required run rate 6.50. Both the batters talking to each other. Sohil is not wearing helmet. Tanay is wearing helmet. That's how you can identify both. And there is a first bowling change. Nirav Mahendra Shah will now be bowling. Nirav batted down the order and got out early, but he is one person who bowled a maiden over on the first day of the tournament. And they would need those maiden overs today if they have to defend 126. On the other end, it's a rock solid start so far by MTM Riders. Going for a big whack, and that should clear the fence for We Jewels 4. Jewels by Varsha Exports. Superb timing. Sohil Shah went aerial route. He knew that this is power play. And I may not get a 6, but I will certainly get Jewels by Varsha Exports 4. And with every 4, MTM Riders are telling you, Dil Mange More. 26. 100 to win now. Again, I think it hit Manit. Again, he is limping with pain. And this time, I think just above his shoes height.
This type of deliveries are called shin grubbers in cricket parlance. And these shin grubbers can be really painful for batter as well as the wicket keeper. 26 without any loss. That ball capped low on the leg stump line and very neatly placed wide of Asit Shah, who comes and stops the ball from square leg. He ran almost up to mid wicket and 2 runs. End of 5th over, 5 over 28 रन. नीरव महेंद्र शाह 1 ओवर 6 रन. सोहिल शाह 21 बॉल में 17, तनय शाह 9 बॉल 5. आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5. नया ओवर लेकर आ रहे अब विलेश साळवी. उनके छोर को बदला गया है. हमने देखा आज मितुल शाह और विस्मय चोकसी के छोर को बदलना कितना फायदेमंद साबित हुआ एमटीएम राइडर्स के लिए. क्या विलेश साळवी का छोर बदलना ये सुचित जयराज शाह और पूरी टीम को कोई कामयाबी दिला पाएगी? क्या आखिरकार मुस्कुराहट वापस लौटेगी टर्फ ब्लास्टर्स में? इसका इंतजार. विलेश साळवी पहली गेंद असरकारक थी. पूरी टीम ने शाबाशी दी. इस बार अपील की जा रही है लेकिन अंपायर की नजरों में तनय बच गए. तनय जैसे ही बच गए होंगे, कई लोगों के मन में गुजराती में एक बात आएगी, बची गयो. (28) इस बार ऑन ड्राइव दौड़ने की जरूरत नहीं है. पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह ये लगा आलीशान चौका. वी ज्वेल्स 4, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स. तनय शाह ने अभी 2 हफ्ते पहले ही 94 रनों की पारी खेली थी फातिमा हाई स्कूल के मैदान पर, और ऐसी एक बड़ी पारी उनसे अपेक्षित रहेगी. 32 रन, 32 विदाउट लॉस. इस बार उठा दिया है और आज के दिन का ये पहला 6. वी ज्वेल्स 6, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स. तनय शाह ठोक डाला, हॉट शॉट. तनय शाह की यही खासियत है, जो सुबह से कोई नहीं कर पाया वो तनय शाह ने किया. ये एमटीएम राइडर्स की खास बात है. 38 विदाउट लॉस.
बेहतर स्ट्रोक था लेकिन आसिफ शाह के बाजू से निकाल नहीं पाए। पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त हुए, 38 रन बगैर कोई विकेट के। पूरे टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो 14 मैचेस जो हमने देखे हैं उसमें बहुत कम इनिंग्स ऐसी है जहां पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा है। सो ये एक अच्छी बात एमटीएम राइडर्स के लिए। एमटीएम राइडर्स की बात ही दुनिया से अलग है। नीरव महेंद्र शाह नया ओवर करेंगे। तने 15 बॉल 15 पर खेल रहे हैं। देखिए तने एक समय था 9 बॉल 5 और अब 15 पे 15। सोहिल 21 बॉल 17। $88 runs required of 84 balls. Required run rate just above 6. पहले विकेट की तलाश में टर्फ ब्लास्टर्स और विजय की तलाश में एमटीएम राइडर्स। इस बार ड्राइव किया था सुचित ने, अपने बाएं पैर से उसको रोका। 39। दोनों बल्लेबाज का अपने आप पर विश्वास ये दिखाई दे रहा है। इस बार बॉल नीचे रही, पीछे गई, कम से कम 1 रन मिलेगा, दूसरा हो नहीं पाएगा, वहां मना कर दिया। बाय का ये रन, स्कोर 40-40। सिंगल। 41। 7 ओवर 41 रन। रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा ऊपर जाता हुआ 6.45। नीरव महेंद्र शाह 2 ओवर 8 रन। सोहिल शाह 26 बॉल 19 रन। तनय शाह 16 बॉल 15। और एक और बॉलिंग परिवर्तन, अब विनय शाह को गेंद थमाई गई है। विनय शाह
विनय शाह इसके पहले एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं और बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक कहा जाएगा, संतुलित आक्रमण। आसित शाह, अभी उनको हमने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है। सुचित ने बॉलिंग की, विलेश साड़वी ने की, विनय अब करने जा रहे हैं, नीरव महेंद्र शाह ने बॉलिंग की है, लेकिन विकेट किसी को नहीं मिला है। क्या विनय शाह विकेट के डिमांड के सामने विकेट का सप्लाई कर पाएंगे? बहुत सीनियर क्रिकेटर है। और वहां पर ये कैच होते होते रह गया। आज देखा हमने विशाल पटनी ने जिस तरह वो कैच लिया था, पटनी के जीवन का यादगार कैच। विनय शाह, दो कदम आगे आकर खेलने का प्रयास था, कैच छूटा, वहां कोशिश अच्छी थी मौलिक की, वो कैच होता तो क्या बात थी, कैच ऑफ द मैच हो जाता। विनय ने लालच तो दिया था लेकिन वो कैच हो नहीं पाया, थोड़ा डिफिकल्ट था। 43। वाइड बॉल 44। 9 एक्स्ट्रास, पहली पारी में 22 एक्स्ट्रास थे। वाइड बॉल, एक्स्ट्रा की संख्या हो गई है 10। क्रीज में पीछे जाकर खेला, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हुए एक रोका गया था नीरव शाह द्वारा। 8 ओवर का खेल समाप्त, 46 रन बने हैं। अब 12 ओवर में रन चाहिए 80। विनय शाह को ओवर 5, सोहिल 20, तनय 17। कमेंट्री बॉक्स में चाय का आगमन होता हुआ, ड्रिंक ऑफ इंडिया। चाय के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, बिना बदनामी का नशा किए करते हैं, बिना बदनामी का नशा किए करते हैं हम वो मासूम लोग हैं जो चाय पिया करते हैं। करोड़ों रुपए का बिजनेस एक कटिंग पे हो जाता है, यह खास बात है हिंदुस्तानी चाय की। तो अब नया ओवर लेकर आ रहे हैं नीरव महेंद्र शाह। आप देख रहे हैं सौरिन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। आज 7वां दिन है इस प्रतियोगिता का। 8 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई। 8 जनवरी, 9 जनवरी, 15, 16 जनवरी, 22, 23 जनवरी।
स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47-47। एक बार फिर से मानित के हाथ में चोट लगती हुई आज मानित को लगातार गेंदें परेशान कर रही है उनकी उंगलियों को, और एक बार फिर से दर्द से थोड़ा सा परेशान। और ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया है। हाथ को गेंद लगी है।
sir. 3 balls remaining. 3 balls remaining. Goes high and handsome, and this will clear the fence. And this is sixer number 2 of the innings, and both have been from the bat of Tanay Shah. Tanay the terrific Shah. V Jewels 6. Jewels by Varsha Exports. Chanceless batting by Tanay Shah. He missed out on the last occasion, but not today. And has bowled him. Nirav Mahendra Shah settles the score, and this is Smith Engineering Company wicket number 1. नौ ओवर 55 रन 1 विकेट. 10वां ओवर स्टार्ट हो रहा है. नीरव महेंद्र शाह 3 ओवर 17 रन 1 विकेट, और सोहेल के साथ जुड़ते हुए रचित कौशिक शाह. रचित के ऊपर जिम्मेदारी है. ये डगआउट का दृश्य है जहां पर आप पूरी MTM राइडर्स को देख रहे हैं. हेमल भाई भी बहुत गंभीर मुद्रा में मैच का मजा लेते हुए. विनय शाह को नया ओवर दिया गया है. एक और अच्छी गेंद विनय की. विनय मौके बनाते रहते हैं, लेकिन विनय को चाहिए कि वो विकेटें चटकाएं, क्योंकि इस वक्त टर्फ ब्लास्टर्स को विकेट ही विजय दिला सकती है. इस बार लूप दिया था और आमंत्रित किया था ड्राइव करने के लिए विलेश साळवी, वहां गेंद को रोकते हुए. और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन. वरुण गोरडिया को आप देख रहे हैं. हर्षिद, हेमल, इस बार शरीर से थोड़ा दूर खेला था, टैप करते हुए आसित शाह की तरफ डीप कवर में. 1 रन. स्कोर 57, 1 विकेट के नुकसान पर. 10वां ओवर चलता हुआ. ये वो स्टेज था जब पहले 10 ओवर में टर्फ ब्लास्टर्स मैच को रूल कर रहा था. 10 ओवर में 62 रन 2 विकेट उनका स्कोर था.
और उसके जवाब में 10वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 57 फॉर 1। एक रन मेरे ख्याल से ये बाय का रहेगा, अंपायर के इशारे का इंतजार, और अंपायर ने आई थिंक बल्ले से था और ओवर समाप्त होता हुआ 10वां 58 फॉर 1। तो पहले 10 ओवर में जहां टर्फ ब्लास्टर्स ने 62 फॉर 2 बनाए थे, उसके जवाब में 58 फॉर 1, 4 रन कम बनाए लेकिन 1 विकेट कम भी खोया है एमटीएम राइडर्स ने। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ग्रीन अर्थ एंड ब्लू स्काई, सूरत की हवाओं में पीपीएल, सूरत की फिजाओं में पीपीएल, सूरत की घटाओं में पीपीएल, पीपीएल के होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे हुए हमने देखे जब यहां आज सुबह आ रहे थे। नए ओवर करेंगे नीरव महेंद्र शाह, विनय शाह 2 ओवर 8 रन। देखिए विनय को विकेट भले ना मिला हो, लेकिन विनय अगर एक छोर से प्रेशर बनाते हैं तो दूसरे छोर से विकेट लेने का वहां पर कोशिश किया जा सकता है अन्य गेंदबाजों द्वारा। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग प्रेशर फ्रॉम वन एंड एंड टेकिंग विकेट्स फ्रॉम अनदर एंड। सोहिल ने बहुत मेहनत की है, जिस तरह अंकित, सुनील शाह और मानित ने आज पहली पारी में बैटिंग की, बिल्कुल वैसे ही टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। सोहिल शाह 25 पर खेल रहे हैं और कप्तान रचित का आगमन हुआ है। नीरव अपना आखिरी ओवर करेंगे। So welcome to Lalbhai Contractor Stadium. You are watching Saurin Shah presents Patan Premier League Season 5. That was a nip backer. Nirav already has a maiden over against his name in this tournament and needs to bowl his heart out in order to win this match for Turf Blasters. Right now the situation is in favor of MTM Riders, but then cricket is the game of glorious uncertainty. It was, it is, and it will always remain a game of glorious uncertainties. Single, 59 for 1. Welcome to all the viewers who are watching this live telecast of Patan Premier League Season 5 on YouTube channel of Patan Premier League. We are thankful to our broadcasting partner Philco Trade Center Private Limited. Special thanks to Shri Patan Jain Mandal. Slapping that delivery of the back foot, they will gather at least one, if not more. So we have august presence of a lot of sponsors today. Trophies sponsored by Healthy Crunch by Monica Shah, who is with us. Wickets sponsored by Smith Engineering Company, Tushar Bhai with us. Maximum Sixes by Patni Opticians, Amit Patni with us. Lower full toss and driven nicely. Smith Hiten Shah to stop the ball. Team Player Award sponsored by Selfie Design, the merchandise store. Sahil Shah, he is going to play the next match. Man of the Series, sponsored by MT Madan. And we have Kamlesh Bhai with us. Medical sponsor Healing Pharma Private Limited. Your health is our world. So 54 balls and 65 runs. Mr. Bhavesh Jain is with us from Healing Pharma Private Limited. Jerseys and kits are sponsored by JP Hairpins, Kalpesh by Zaveri and family.
They are with us today. Goodies are sponsored by Vomeo. Love freshly served. So, thank you so much, Sagar Bhai Shah. Hydrating sponsor, White Divine, Mamta Shah. Broadcasting partner, Philco Trade Center Private Limited. Thank you. As Vinay starts the fresh over from Sunil Gavaskar end. So that was driven in V and will get a single. Cricket balls are courtesy Allied Digital, IT managed responsibly, Prakash Bhai. Boundary sponsored by Jewels by Varsha Exports. Single, 63 for 1. PPL app and man of the match sponsor SK, we serve since 1932. And catch of the match by Trinity Entertainment, Vismay Choksi. So that was a pull shot that travelled towards wideish long on. Vilesh Salvi, the fielder. It's a quiet cricket and understandably so, because MTM Riders are not in hurry. They need 4 points to climb up the table. As per the rules, for every win, a team will be given 4 points. For every loss, no points would be given. And for every tie, 2 points. Vinay is into his third over. 64 for 1. Playing it towards wideish gully. Asit came running in from point and 2 runs. 66 for 1. So 60 to win now, and this is the dugout where Vishal Patni, Tanay Shah, Mitul Shah, I think Jash is there. These beautiful pictures are captured by our cameraman who work for endless hours. Nice backdrop, Surat buildings and the business and office establishments. So this is the bowling story. Nirav 4 overs 20 for 1, Suchit 2 overs 5, Vilesh 3 overs 27, Vinay 3 overs 13. Will we be able to see the bowler? And I think yes, Asit Shah. Now there you see Asit Shah, who has bowling action resemblance to Madipa, that's Madan Lal. And he has contributed with wickets lot of time. And today is one day when Suchit Jairaj Shah has given him the ball. Asit Bhai, wicket line apo. Trying to find the gap and will certainly be successful. That will race to the fans for 4. V Jewels 4, Jewels by Varsha Exports. Hemal Bhai now showing that Colgate smile after that boundary. And why not? MTM Riders are looking more determined than ever. Short and wide, punished, past the gully. Gully boy, Vilesh Salvi couldn't stop it, diving to his left. 70 for 1. 56 to win. That ballooned in the air and oh, that was an chance. Now that should have been taken considering the fact that you are playing a tournament. But what a try by
Vilesh Salvi, Asit certainly bucking him up, but that was a big mistake. And that could have been curtains for Sohil. Sohil has got the start. He will have to sustain now. "46 balls, 56 to win." So we are transitioning now from afternoon to evening. Still a lot of light on the stadium, whereas the shadows have started growing big. Next half an hour would be very crucial from the point of view of result of this match, or rather next 5 overs would be very crucial for both the sides. Good delivery. Asit is bowling stump to stump line. 71 for 1. 55 to win. That was right from the middle of the bat, and Rachit completes a single. 72 for 1. Last man out, Tanay Shah, bowled by Vinay. Required run rate going up slightly, 7.36. This time lofted in the air and a single. Harsh Sanghvi stopping the ball. 73 for 1 at the end of 13. ભલે છૂટારાથી પણ દેશ પ્રેમ ના જાય માતીની Vinay is into his last over. કેમ કરી વિસરા Vinay this time cross-batted stroke and a single. What I like about Sohil and Rachit is they are constantly building pressure by taking singles, playing in the gaps. That's what you got to do. Make the opposition sweat and sweat a lot. Now single, that would be converted into 2. Good running between the wickets. $76 for 1.
So another shooter ball. (76 for 1). 14th over. Single towards widest extra cover. 77 for 1 at the end of 14 overs. So required run rate has gone slightly up, 8.17. Vinay 4 overs, 17 runs, no wickets. 36 balls, 49 runs. Tanay Shah became the first batter to hit 2 sixes in an innings today at Lalbhai Contractor Stadium. Asit will bowl the next over, and batter facing him is none other than Rachit Shah. He is on 9 of 12. Sohil 36 of 51. Again from a warm afternoon, we are slightly transitioning now to pleasant evening. There's not much wind here. But state-of-the-art facility by Surat District Cricket Association. The way Mumbai, or rather the Maharashtra has a Mumbai Cricket Association, Vidarbha Cricket Association and Maharashtra Cricket Association. Similarly, Gujarat has 3 cricket boards. Saurashtra Cricket Association, Gujarat Cricket Association and Baroda Cricket Association. And of course, Surat District Cricket Association. (35 balls, 48 to win). Single. 34 balls, 47 to win. This partnership has blossomed now, 24 runs. Slowly the required run rate is mounting, and as long as it is below 9, we understand, but the moment it goes above 9, yeah, that's it. That is Asit Shah for you. He created a pressure, and Trinity Entertainment catch of the match by Suchit Jairaj Shah and Smith Engineering Company, wicket number 2. Turf Blasters believe in rough and tough cricket, and that is what they have done. New man in is Harshid Shah.
पेन के सुबह से बैठा है नेगेटिव आ जाएगा हुआ क्या वो आया कि नहीं अभी तक ठीक है कभी रिजल्ट दे रहा है मतलब रिपोर्ट कभी दे रहा है 80 for 2। आसित का कामयाब ओवर, 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। आसित शाह बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब गेंदें बची है 30 और रन चाहिए 46। रिक्वायर्ड रन रेट 9.20। आसित शाह की यह खास बात है टर्फ ब्लास्टर्स के, देखिए आप घोड़ा दिख रहा है आपको, घोड़े की पैर के निशान, और एमटीएम राइडर्स में गर्जना करता हुआ शेर। नया ओवर लेकर आ रहे अब सुचित जयराज शाह, 2 ओवर 5 रन। सुचित का बॉलिंग विश्लेषण। नीरव 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। विलेश 3 ओवर 27। विनय 4 ओवर 17। यानी कि आसित के पास 2 ओवर बचे हैं, सुचित के पास 2 ओवर बचे हैं और 1 ओवर विलेश साळवी के पास बचा है। सुचित जयराज शाह नए बैटर है हर्षिद शाह, 2 बॉल 1। सोहिल 37 पर खेल रहे, एक संघर्षपूर्ण पारी कही जाएगी सोहिल की। इस बार बैकफुट पर गए, पुल कर दिया है लेकिन 1 रन। स्कोर 81, 2 विकेट पर। 81 for 2। फुल टॉस बॉल दी और ये बेस बॉल हिट, और वहां रोकी गई अंकित सुनील शाह द्वारा। अंकित का थ्रो और ये मिले 2 रन। 83 for 2, 83 पर 2। क्या जबरदस्त फील्डिंग दी वहां पर अंकित सुनील शाह की। (83 for 2)। इस बार गैप में खेल दिया, लेट कट और 4 रन। शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। सुचित की बॉल टप्पा खाकर बाहर मुड़ी और सोहिल ने केवल उसको दिशा दी और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर धकेल दिया 4 रन के लिए। विलेश साळवी वाइड खड़े थे, प्लेसमेंट फाइन थी। 87 for 2। आसित के पास गई गेंद और 88 for 2। 38 रन और चाहिए, 16वां ओवर चलता हुआ। वो चौके ने थोड़ा मैच में जरूर वापस लाया एमटीएम राइडर्स को। इस बार ड्राइव किया, आसित अभी अभी अपना ओवर करके आए, उनको वापस व्यस्त रखा है। 2 रन और 90 for 2। आड़े बल्ले से खेल दिया, गैप में तेज तर्रार, भागती हुई गेंद, रोकने का प्रयास और अब जाकर वहां पर एक ही रन मिलेगा। अपने आप को झोंक दिया था वहां पर। बहुत जबरदस्त क्रिकेट चल रहा है। अब 16 ओवर 91 रन 2 विकेट, 24 गेंदे 35 रन, 24 बॉल्स 35 टू विन। यहां पर दोनों पारियों के बीच के जो एक्स्ट्रा रन हैं वो भी उतने निर्णायक साबित होंगे। एक मैजिक ओवर चाहिए टर्फ ब्लास्टर्स को, जबकि 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए बॉल टू बॉल इक्वेशन पर आने के लिए।
MTM राइडर्स को। आग दोनों तरफ बराबर लग रही है। टर्फ ब्लास्टर्स का कहना है कि जो आग तुम्हारे सीने में जल रही है वही आग हमारे दिलों में भी जल रही है। 24 गेंदे 35 और आसित अपना तीसरा और पारी का 17वां ओवर अंजाम करेंगे। आसित 2 ओवर 10 रन 1 विकेट। दोनों बल्लेबाजों के लिए पानी लेकर गए थे तनय और रचित। चवालीस पर खेल रहे सोहिल शाह। क्या आज के दिन का पहले अर्धशतक उसके नाम लिखा जाएगा लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पर? बेहतर बॉल आसित शाह गेंदों को अच्छा पिचअप कराते हुए। इस बार पुल कर दिया है लॉन्ग हॉप, उस पर 1 रन। यानी कि अब 34 रन चाहिए 22 गेंदों में। 22 बॉल्स 34 टू विन। ड्राइव कर दिया और ये बॉल जाएगी मैदान के बाहर। चाबुक शॉट। वी ज्वेल्स फॉर ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। 96 for 2। इस बार उठा दिया और ये ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच स्मिथ हितेन शाह के हाथ में आता हुआ। और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 3 और सोहिल शाह की पारी पर पूर्ण विराम लगाया आसित ने। नए बैटर है दर्शिल झवेरी डीजे। लेकिन सोहिल ने जो पारी खेली है वाकई में तारीफ करना चाहूंगा। प्रेशर भरी सिचुएशन में सोहिल ने, और तालियों की गूंज के साथ अभिवादन किया जा रहा है पूरी टीम का, स्टैंडिंग ओवेशन। ये मैच अब एक बार फिर से फंस गया है, अब कहीं भी जा सकता है। आसित शाह, दर्शिल झवेरी। आसित शाह की भी तारीफ करना चाहूंगा। चौका खाने के बाद विकेट लेना आसान काम नहीं होता। आपने मुरलीधरन को देखा होगा, चौका छक्का खाने के बाद विकेट लेता था। आसित शाह अपनी खुद की रेस में है, उनका किसी से मुकाबला नहीं है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, न किसी से ईर्ष्या न किसी से होड़। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, ये आसित शाह है। थर्टी टू विन। ट्वेंटी बॉल्स 30 टू विन। फुल टॉस बॉल और इसको भेज दिया मैदान के बाहर 4 रन के लिए। वी ज्वेल्स चौका, ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। हर्षिद टीम को 100 पर पहुंचाते हुए अब 26 की दरकार।
सिंगल स्ट्राइक अपने पास रखेंगे हर्षिद शाह, यानी कि अब गेंदे बची है 18 और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 25। एटीन बॉल्स 25 टू विन। आप देख रहे हैं सौरीन शाह प्रेजेंट्स पाटन प्रीमियर लीग सीजन 5। सुचित अपना आखिरी ओवर करेंगे, मतलब एक ओवर सुचित का बचा है, एक आसित का बचा है, एक विलेश साळवी का बचा है। अब किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि ओवर नंबर 18 सुचित करते हैं तो 19वां ओवर जो है ये ऑप्शन किसको दिया जाएगा, ये भी एक सवाल। $101 for 3 MTM Riders। हर्षिद सामना कर रहे हैं इस वक्त सुचित का। दो कदम आगे आकर खेला, विलेश के पास एक रन। $102 for 3। इस बार उठा दिया है, कैच तो हो नहीं पाएगा लेकिन एक रन और दूसरे की दौड़। और यहां पर तीसरे अंपायर की मदद। नॉट आउट दिया गया है, यानी कि 2 रन पूरे हुए। $104 पर 3, 22 की जरूरत। इस बार स्क्वायर ड्राइव, आसित के पास जाती हुई गेंद और 2 रन और। 106 पर 3, अब 20 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बची हुई 15 गेंदों में। 15 बॉल 20। एक बड़ा स्ट्रोक और एमटीएम 1 विकेट और टर्फ ब्लास्टर्स। बिल्कुल नाजुक धागे के ऊपर यह मैच आ गया है और ये 2 टीमों के बीच में हमेशा अच्छा मैच हुआ है। इतिहास के पन्नों को अगर खोला जाए तो वो 106 वाला मैच मैं आज भी भूला नहीं हूं। इस बार निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर से और ये लगा वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स। 110 पर 3। दर्शिल झवेरी। चौदह गेंदे 16 रन।
2 रन और 112 पर 3। सुचित के पहले 2 ओवर में 5 रन आए थे, अब वो चौथा ओवर पूरा करने जा रहे हैं और 27 रन उन्होंने दिए हैं अब तक। शॉट एंड पुल 1। बारह गेंदे 13 रन। हो गया तो क्या अपना फटाफट पैकअप करके निकलना है, क्योंकि उधर अंपायर रेडी है, देखो टीम दोनों रेडी है। अरे नहीं हो जाएगा ना, सब रेडी हो गए, अंपायर रेडी है। नहीं नहीं अपने को चाहिए, वो बात तो सही है, नहीं आपका नहीं, मतलब बता रहे थे लोग अंपायर रेडी हो गए, टीम्स रेडी है, शायद टॉस हो गया है। So you are watching Saurin by Shah, enjoying the match, the title sponsor. गेंदे है 12 और रन चाहिए 13। गेंदे है 12 और रन चाहिए 13। दोनों टीमों ने एक दूसरे को है घेरा। सुचित 4 ओवर 28 रन। सुचित के आखिरी 2 ओवर में 23 रन बने। अब आसित के ऊपर जिम्मेदारी है। थोड़ा धूप छांव वाला क्रिकेट इस वक्त चल रहा है, आधी धूप आधा छांव। और आसित शाह अपना आखिरी ओवर 3 ओवर 20 रन और 2 विकेट। इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा 1 रन और 11 बॉल 12 रन, 11 balls 12 to win। तो ये हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स। दस बॉल 11 रन, 10 balls 11 to win, 125 for 3। Ten balls 11 to win। इस बार खेला है, 1 रन पूरा किया, 9 balls 10 runs। Nine balls 10 to win। इस बार पुल कर दिया है, कम से कम 1 मिलेगा और 2 की कोशिश, और 8 बॉल 8 रन, 8 balls 8 runs। अगली 2 बॉल आसित की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी टर्फ ब्लास्टर्स के लिए। एक रन, 7 बॉल 7 रन, 119 for 3, 7 balls 7 to win। और यहां पर आसान कैच, अब इससे आसान कैच क्या होगा, यह लगा वी ज्वेल्स चौका। ज्वेल्स बाय वर्षा एक्सपोर्ट्स 4। अंकित सुनील शाह की कोशिश थी, लेकिन वो कैच गया हाथ से और मैच भी गया, ऐसा हम कह सकते हैं इस वक्त, क्योंकि 6 बॉल
और 3 रन। आसित 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। आखिरी ओवर करेंगे विलेश साळवी। विलेश साळवी ने अपने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं। साळवी को चाहिए कि एक मैजिक ओवर करे। पहली 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी विलेश साळवी की। मैं नहीं चाहता एमटीएम राइडर्स इस मैच को आखिरी बॉल तक ले जाना चाहेंगे। वो 2 बॉल रखकर ही जीतने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लास्ट बॉल का प्रेशर अलग होता है। विशाल पटनी भी पैड अप करके रेडी है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूं। और यहां पर ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट कैच ऑफ द मैच ले लिया है हर्ष संघवी ने, और स्मिथ इंजीनियरिंग कंपनी विकेट नंबर 4। पांच बॉल 3। गेंद को कोण बना के बाहर ले गए थे और एक आसान कैच दिलवा दिया हर्ष संघवी के हाथ में। नए बैटर जा रहे विशाल पटनी। पटनी को अब मसालेदार क्रिकेट दिखाना होगा, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर लौटे हर्षिद शाह। 5 बॉल 3। अगली 2 बॉल बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार उठा दिया कि एक और विकेट होगा, नहीं, इसके साथ ही मैच को जीत लिया है। जी हां, एमटीएम राइडर्स 8 पॉइंट पर और 6 विकेट से भव्य विजय मुबारक हो। दर्शिल झवेरी डीजे, दर्शिल झवेरी डीजे ने जो स्टाइल में मैच जिताया, काबिल तारीफ और हार्ड लक यहां पर हम कह सकते हैं टर्फ ब्लास्टर्स। 10 रन कम पड़े, जो सुचित बता रहे थे टॉस सेरेमनी में कि 140 तक हम जाना चाहेंगे, एंड देवर 14 रन शॉर्ट। लेकिन छूटे हुए कैच, और सबसे बड़ी बात है सोहिल शाह के 48 और तनय के जो रन थे वो निर्णायक साबित हुए, एंड दे वन द मैच। कांग्रेचुलेशंस कमलेश भाई, हेमल भाई। So this is the match summary, and a confident victory. Superb innings by Sohil Shah. Tanay Shah contributing 23, Darshil Jhaveri contributing 21 of 9, Harshit contributing 16 of 14. So finally, the teamwork makes dream work, and they won this match in style. So we'll be back with the presentation ceremony in a short while from now. Thank you.
You know, I like my things personalized. Here's how I do it. It's that easy.